Good morning all of you. So welcome to Network Geeks and this is our first class on SD-WAN. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SD-WAN के बारे में. What will be the agenda of the day. In SD-WAN we are going to discuss today introduction of the SD-WAN कि SD-WAN है क्या, काम कैसे करता है. Okay. And secondly we will discuss why we need SD-WAN, okay, and what it is and how it works, right. तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. And what are the key components of SD-WAN. And after that like SD-WAN components and the use case of the components. Like in SD-WAN we have control plane traffic, okay, and data plane traffic, वो कैसे काम करेगा, and management plane, okay. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द SD-WAN डिप्लॉयमेंट कि हम SD-WAN को डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हमारे पास एंड वो काम कैसे करते हैं. एंड वी ऑलरेडी राइट डाउन द प्लेन्स ऑफ द SD-WAN कि इन प्लेन्स के लिए कौन कौन से कंट्रोलर्स होंगे और वो कैसे काम करेंगे, वो बहुत आगे की बातें हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. सो एज यू नो वी ऑलवेज हेयर ए टर्म दैट इज ऑटोमेशन. तो ऑटोमेशन एक टर्म है जो आपने बहुत बार सुनी होगी नेटवर्किंग में कि वी आर मूविंग टुवर्ड ऑटोमेशन, वी हैव टू ऑटोमेट द नेटवर्क एंड ऑप्टिमाइज द नेटवर्क, राइट. So what do you think about automation? Any one of you know about automation? Like जो भी आपका बेसिक आइडिया बता सकते हो क्लियरली कि मुझे ये पता ऑटोमेशन के बारे में कि ये ऑटोमेशन होती है. Anyone know about that? ओके. ऑटोमेशन बेसिकली क्या होती है, लाइक राइट नाउ हम एक नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं. ओके, सबसे पहले एक नेटवर्क में बात आती है कि हाउ यू कॉन्फ़िगर ए नेटवर्क, ओके, एंड मैनेज द नेटवर्क, मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क एंड ट्रबल शूट द नेटवर्क, राइट. तो इन सारी चीज़ों में हम जैसे एक अप्रोच फॉलो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्या अप्रोच होगी मेरे डिवाइस को, एंड हाउ आई विल मैनेज ऑल ऑफ माई नेटवर्क कंपोनेंट्स एंड हाउ आई विल टीच आउट. तो इन्हीं सारी चीज़ों को थोड़ा और इजी करने के लिए फ्रॉम ए नेटवर्क इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, तो उन चीज़ों को इन्होंने क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया. लाइक अगर मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल दूं, लाइक अगर मेरे पास कोई भी गाड़ी है, ओके, सपोज करो मैं कार ड्राइव करता हूँ, तो हमारे पास मोस्टली पहले क्या थी, सारी की सारी कार्स क्या थी, मैनुअल थी. एंड मैनुअल में हमें हर कुछ स्पीड के, लाइक अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर पे हूँ और मैं 40 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा हूँ, तो वी हैव टू चेंज द गियर्स, राइट. तो मुझे उनको चेंज करना पड़ता था 1 से 2 पे, 2 से 3 पे. बट नाउ वी कैन सी वी हैव ऑटोमेटिक कार्स, राइट. तो ऑटोमेटिक क्या होती है, काम तो वो भी ऐसे ही कर रही है, बट नाउ आई नो नीड टू चेंज, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता एक्सीलेटर का, राइट. तो हमने क्या किया, अपने डिवाइस को ऑटोमेट कर दिया टू मेक वर्क मोर इजी. तो हमने क्या किया, ड्राइविंग को और इजी बना दिया, राइट. सो सिमिलर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क कि मैं नेटवर्क को और इजी कैसे बना सकता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे बोला ऑटोमेशन में, अगर मेरे पास सपोज करो, आई एम गिविंग एग्जांपल, आई हैव 100 नंबर ऑफ राउटर्स, राइट, एंड हाउ आई विल कॉन्फ़िगर दीज राउटर्स. अगर मुझे एक स्क्रैच से नेटवर्क को बिल्ड करना है तो मुझे क्या करना होगा, आई नीड टू कॉन्फ़िगर ऑल राउटर्स और डिवाइसेस, जो भी राउटर या डिवाइसेस होंगे मेरे पास, स्विचेस हो सकते हैं, फायरवॉल्स हो सकते हैं, नीड टू कॉन्फ़िगर मैन्युअली, राइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. तो जब मैं डिवाइसेस को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने जाता हूँ तो आई नीड मैन पावर, राइट. तो मुझे बहुत सारे जो टेक्निकल पर्सन है वो चाहिए, जो मेरे इंजीनियर्स हैं. एंड आई नीड ए टाइम फ्रेम एज वेल कि जिस टाइम फ्रेम में मैं उनको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ. अगर मैं नंबर ऑफ टेक्निकल पर्सन कम रखूँगा, मैन पावर कम होगी, तो मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में. अगर मैं मैन पावर बढ़ाऊँगा तो इट विल बी कॉस्टली फॉर मी, राइट. तो इन्हीं सब चीज़ों को ये ऑटोमेट करते हैं. लाइक इन सिंगल लाइन हाउ यू कैन से ऑटोमेशन. ऑटोमेशन इज समथिंग, this is
providing ability to engineers push or fetch the configuration in सेकेंड्स। तो सेकेंड्स में हम बोल सकते हैं जी, अगर मेरे पास बहुत बड़ी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं अपने राउटर्स को कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ या उनसे कॉन्फ़िगरेशन फैच करने जा रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि इन पे कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, विच प्रोटोकॉल्स आई एम यूजिंग, राइट। तो उन सब चीज़ों को मैं ऑटोमेशन के थ्रू ईजी बना सकता हूँ, राइट। तो ऑटोमेशन के थ्रू मैं कैसे ईजी बना सकता हूँ, इफ़ आई एम गिविंग यू ए बेसिक आइडिया। So first of all, I'm not talking about SD-WAN only. तो there are multiple SDN technologies, right? तो SDN क्या है, ये टर्म्स क्या है, बड़ी बड़ी टर्म्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जस्ट गिविंग यू आइडिया, SDN इज गिविंग यू ए डिवाइस दैट इज नोन एज कंट्रोलर। क्या है ये? कंट्रोलर, राइट। कंट्रोलर मीन्स हु कैन कंट्रोल द कॉन्फ़िगरेशन and do the configuration and like visualize the configuration and monitor the configuration। तो कंट्रोलर एक डिवाइस होता है जो सबको कंट्रोल करता है। लाइक यू कैन से, अगर आपके एक टेक्निकल टीम है, राइट, ऑफिस में, एंड टेक्निकल टीम हैव ऑलवेज ए टीम लीडर जिसको हम टीएल बोलते हैं, राइट। तो टीम लीडर क्या करता है, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, उस सारे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना एंड काम को असाइन करना पर्टिकुलर इंजीनियर्स को अकॉर्डिंग टू देयर शिफ्ट एंड रूटीन, राइट। तो ऐसे ही हमारे नेटवर्क में क्या होगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास ये क्या है, मास्टर डिवाइसेस को हम कंट्रोलर बोलते हैं। सो कंट्रोलर इज हेयर एंड आई हैव मल्टीपल डिवाइसेस हेयर। लेट मी कॉन्फ़िगर लाइक ए राउटर। तो एक राउटर यहाँ पे है, राउटर 2 यहाँ पे है, राउटर 3, और इट कैन बी एनी डिवाइस, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ए राउटर, ओके। तो ये क्या करेगा, कंट्रोलर इन सब से कम्युनिकेट करेगा, ओके। एंड कम्युनिकेशन इन द सेंस कि जब आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो मेरे राउटर के ऊपर, तो आई नो नीड टू मूव ऑन ऑल द राउटर्स वन बाय वन। तो मैं कंट्रोलर पे जाऊंगा, सबसे पहले मैं अपने डिवाइसेस को क्या कर सकता हूँ, इससे कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, ओके। configuration is what kind of configuration it can be, it can be multiple type of configuration, it can be related to a IP address। मुझे IP address कॉन्फ़िगर करना है राउटर पे, ओके, हो जाएगा। and I want to configure routing protocols, like I want to configure EIGRP, OSPF and BGP, हो जाएगा। and there are more things, like मैं policies कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। पॉलिसी का मतलब क्या है कि मैं रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ कि जो यूज़र्स इस राउटर से कनेक्टेड है वो सेकंड वाले राउटर से बात करेंगे या नहीं करेंगे। आई कैन रिस्ट्रिक्ट दीज थिंग्स इन SD-WAN solution or any other solution, those are part of SDN, right? And there are more things like we can monitor the network, कि मेरे नेटवर्क में चल क्या रहा है और मेरे नेटवर्क डिवाइसेस की हेल्थ क्या है। लाइक व्हाट इज़ द CPU एंड मेमोरी स्टेटस ऑफ दिस राउटर, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब जो मैं लिंक यूज़ कर रहा हूँ मेरे कंट्रोलर और राउटर के बीच में, उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरे उस लिंक पे लेटेंसी कितनी आ रही है, ओके, कितने मिली सेकेंड्स है। एंड व्हाट इज़ द जिटर, राइट, एंड व्हाट इज़ द पैकेट लॉस। तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ से मॉनिटर कर सकता हूँ मेरे कंट्रोलर से बैठ के। तो मैंने क्या किया है, जिन सारे डिवाइसेस को मैं वन बाय वन कॉन्फ़िगर करता था, ओके। तो हम कॉन्फ़िगर कैसे करते थे पहले डिवाइस को, लाइक आई हैव टू टेक CLI, तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। एंड सेकंड, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट कैसा था इनका, मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंडिविजुअल, राइट। तो मुझे सारे डिवाइस का क्या करना पड़ता था, आई नीड टू टेक टेलनेट और SSH फॉर सिक्योर कनेक्शन। And there are more things like I can use AAA to make it centralized authentication method। and उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और options है, like I can use SNMP to monitor the health and the status of the device। तो ये सारी चीज़ें अब मेरा एक सिंगल कंट्रोलर से हो जाएगी। Why I have to move on thousands of devices one by one, right? So automation is giving you ability to manage and configure thousands of network devices थ्रू द स्पेसिफिक कंट्रोलर्स। तो पहला आप कंट्रोलर से कर सकते हो वो सारी चीज़ें, राइट। एंड देर आर ऑल्सो सम टूल्स और लाइक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट होती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं इस कंट्रोलर को भी
इस कंट्रोलर पे अगर मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास इस कंट्रोलर के अंदर 1000 डिवाइसेस रजिस्टर्ड हैं, अब मैं सारे डिवाइसेस को वन बाय वन ओपन करके कंट्रोलर के अंदर नहीं देखना चाहता, मुझे इनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ही वेरीफाई करनी, लाइक व्हाट काइंड ऑफ हार्डवेयर वी आर यूजिंग हेयर. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज़ हेयर सम स्क्रिप्टिंग. तो उस स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं. ओके, तो स्क्रिप्टिंग के बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो अनदर मेथड कि मैं स्क्रिप्टिंग के थ्रू इन कंट्रोलर से कॉन्फ़िगरेशन को फैच कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ, राइट. ओके, यहाँ तक डाउट है किसी को, लाइक व्हाट इज़ द main point of automation? So automation is giving you ability to manage your entire network through some tools. जो ऐसे टूल है जिनके थ्रू आप पूरे नेटवर्क को मैनेज कर सकते हो. ओके, देयर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ टूल्स फॉर नाउ. एनी डाउट गाइस? अंकित, ऋषि, अमित, निखिल, like are you getting the points what I am trying to explain here? आप में से किसी को ऐसा तो नहीं है कि सर ये आपने क्या टर्म बोल दी, मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में, what it is. Okay, great. So let's come to few more points over the transport and like why we need SD-WAN. तो ये automation था. तो automation में we have multiple type of technologies. So first of all I'm starting here with what, or we can say why we need SD-WAN, right? So why we need SD-WAN? To understand this we need to know first of all what is WAN. Anyone know about WAN network, wide area network? Okay, let me explain you what is WAN network. So this network is used to connect multiple sites with each other for data sharing or communication, right? That is the same thing. अगर मुझे मल्टीपल साइट्स के बीच में डेटा शेयर करना है, आई नीड ए थर्ड पार्टी, राइट, बिकॉज मैं अपना नेटवर्क तो बना नहीं सकता, विच इज़ मोर एक्सपेंसिव फॉर मी. ओके, अब हमें क्या चाहिए? थर्ड पार्टी सॉल्यूशन चाहिए विच आर प्रोवाइडिंग अस कनेक्टिविटी, लाइक दीज आर ट्रांसपोर्ट व्हाट वी कैन यूज फॉर WAN पर्पस. So transports are here, like I can use MPLS, okay, I can use internet, we can use LET, okay, like 4G and 5G, okay, and there are more if you go. तो ये सारे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जो हमें कनेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं. लेट मी मेक इट अप ऑल्सो सो देयर विल बी मोर क्लैरिफिकेशन. I have one site. Okay, so suppose we have here one router, second router is here, and these are the spoke sites or branch site. So this can be your headquarter or data center. So usually we connect with the data center, okay, or it can be headquarter as well if we are talking about a small organization, okay. And these are my branch networks, okay. So branch 1 and this is branch 2. So what we do normally, we connect with the transport, okay, and that transport is known as WAN network, okay. So this is my WAN network, okay, and we also call it internet service provider. And we have usually two main service provider. Right now we have one more. One is Airtel, okay, and TCL, Tata, and Jio is also I think providing the same service now. तो हमारे पास मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिनका काम बेसिकली क्या होता है,
this is my some training organization, okay, like NG Geeks, Network Geeks. एंड NG Geeks का डेटा सेंटर यहाँ पे हमारा सपोज करो दिल्ली में है, एंड वी हैव ब्रांचेस इन बेंगलोर एंड मुंबई. तो अगर मुझे यहाँ से मैं लाइव ट्रेनिंग दे रहा हूँ, राइट, सो हियर इज़ माय इंस्ट्रक्टर और trainer is sitting in my data center, and this is online training which is broadcasting on these two sites. Okay, तो यहाँ पे मेरा सारा ट्रैफिक क्या होगा, इस ISP के थ्रू मेरी इस वाली साइट पे जाएगा एंड इस वाली साइट पे जाएगा, राइट. सो द ऑल कम्युनिकेशन इज डिपेंड ऑन द WAN network, how they are providing us services. So there are multiple devices on WAN in this WAN network, like maybe 100 of routers over here. One router is here, one is here, one is here, one is here, because your router also connected with someone. जो आपका डिवाइस होगा, ये वाला अगर मेरा राउटर है या फिर फायरवॉल है सपोज करो, तो ये भी तो किसी से कनेक्ट होगा ना. लाइक हेयर इज ऑल्सो अनदर डिवाइस फ्रॉम द प्रोवाइडर साइड. सो दिस इज कस्टमर डिवाइस एंड दिस इज प्रोवाइडर डिवाइस. सो दिस इज नोन एज CS, कस्टमर एज ए राउटर. PE stand for provider as a router, okay, and this is also P device, P device and P device. But there can be more devices as well जो यहाँ पे exist करेंगे, like one router is here and second router is here, so that is providing internal connectivity. तो इस connectivity के बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, that is not our task. So that is all for WAN network, right? But in WAN network में which one we use according to a traditional network architecture, right? Like what will be the transport when I'm using MPLS, when I'm using internet or LT, right? So let understand that point. तो यहाँ से आपको WAN की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि WAN नेटवर्क होते क्या है. बेसिकली विच प्रोवाइड सर्विसेज टू मल्टीपल कस्टमर्स. कस्टमर कैन बी एनीवन, like a organization or a normal user who need internet access. यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेडिशनल नेटवर्क का जो आपका आर्किटेक्चर होता है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है. Okay, so traditional network if I'm talking about from a point of view of organization, तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले मेरे पास क्या हो सकता है, डेटा सेंटर हो सकता है, राइट. एंड देन आई हैव हेडक्वार्टर, एंड देन वी हैव ब्रांचेस एंड रिमोट साइट्स, राइट, और रिमोट लोकेशन. तो ये हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है या लोकेशंस होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में. अब ये कनेक्टिविटी कैसे होगी और इनका जो स्टैंडर्ड होता है कम्युनिकेशन का वो कैसे होगा. सो सपोज हियर आई हैव this is my data center, and this is my one branch. Okay, let's not make multiple. Okay, and here we have one cloud and another cloud. Okay, this cloud for internet and this is for MPLS, and here is my data center. Okay, so data center have some security devices, like I'm using firewall because we need firewall for security reasons to prevent the attacks, and there are multiple reasons. And here I'm using another router 1. So this is my branch. Okay, and maybe I have here one headquarter as well, which is also connected here. Okay, and this is also connected with internet. अब यहाँ पे मेरा जो यूज़र होगा वो यहाँ कनेक्टेड होगा. And in data center what we do, we have multiple type of services, and these are the servers for specific services, right? Like I'm using some SAP application or something, or it can be any kind of service which is exist in my data center. तो यूज़र को जब भी कुछ कम्युनिकेट करना हो या किसी पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करना हो,
जो इंटरनल डोमेन से है, so they always use MPLS path. Why MPLS path? That is the first point, right? Because we have internet as well and MPLS as well. So what I can do, I can connect with both transport, but right now I'm not moving with both transport. कुछ खाने जाएंगे तेरे लिए आएंगे, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे दोनों ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई वी नीड MPLS. सो द फर्स्ट थिंग, MPLS इज प्राइवेट एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट. जो MPLS एग्जिस्ट करता है आपको वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माना जाता है. लाइक वी कांट यूज इंटरनेट सर्विसेज ओवर दिस लिंक. इफ़ आई नीड इंटरनेट सर्विसेज, अगर मैं सिर्फ इसी से कनेक्टेड हूँ, मेरी कोई और कनेक्टिविटी नहीं है कहीं पे भी, आई कांट यूज इंटरनेट और सर्विसेज लाइक यूट्यूब, फेसबुक और एनी सर्विस इंजन लाइक याहू और समथिंग. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो सिक्योर ट्रांसपोर्ट. लाइक मेरा जितना भी ट्रैफिक जाएगा सारा सिक्योरली फॉरवर्ड होगा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. So the main idea behind MPLS is to providing secure communication between the sites. तो अगर मेरी दो साइट है like data center and the branch, so they can easily communicate over the MPLS without any interruption, right? Because they are not going for internet services. But suppose now this client needs some internet services and they don't have internet connection over here. So how it will work now? So user is moving first of all via MPLS to my data center, right? After data center, firewall is going to look up into the policies कि क्या क्या policies होंगी, like user के लिए कौन कौन से URL या कौन कौन सी application accessible होगी through the internet. तो वो सारी policies मैं कहाँ पे define करूँगा, इस firewall पे define करूँगा अपनी branches के लिए. Okay, and then traffic will move to the internet to access the internet services, right? अगर आप यहाँ पे अभी बात करोगे कि sir why we can't use direct internet connection over the site, why we are forwarding the traffic through the data center and then to the internet? Because it will provide latency and jitter, right? Yes, we can use directly connection over here, but let me tell you something. We are using here router, we are not using here firewall. So router have very limited features for security. Like we don't have URL filtering option here, right? We can just use few features, like if you know we have zone based firewall. जोन बेस्ड फायरवॉल एक फीचर होता है जिसमें आप एक राउटर को थोड़ा सा फायरवॉल की तरह एक्ट करवा सकते हो, बट दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ए सिक्योरिटी डिवाइस, दिस इज़ ए राउटिंग डिवाइस. अगर राउटिंग डिवाइस है, वाई आई एम यूजिंग दिस डिवाइस एज ए सिक्योरिटी डिवाइस, राइट? अगर जो काम मेरा राउटर का है वो उसको करने दें, वाई वी आर इन्वॉल्विंग द डिवाइस फॉर अनदर टास्क, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट लिंक डायरेक्टली यूज़ भी करने लग जाऊँगा तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या होगा, मेरे ब्रांच में किसका आ जाएगा, सिक्योरिटी का, राइट? कि कोई भी बाहर से डिवाइस आएगा, अटैक कर देगा और मेरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, या कुछ भी यहाँ पे जो यूज़र्स हैं उनको मालवेयर डेटा मिल जाएगा एंड दे विल एक्सेस द मालवेयर डेटा बाय मिस्टेक. और उसके बाद क्या होगा, जो भी मेरा डेटा इन यूज़र्स के पास होगा वो सारा का सारा अटैकर के पास चला जाएगा, राइट? या करप्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकंड, यू कैन से सर अगर फायरवॉल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है डेटा सेंटर में, तो व्हाई वी कांट इंस्टॉल वन फायरवॉल ऑन दिस ब्रांच साइड एज वेल. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन यूज ए सेपरेट फायरवॉल ऑन द ब्रांच साइड्स. अगर मैं फायरवॉल यूज करूँगा सारी साइट्स पे, अगेन आई नीड ए इंजीनियर टू मैनेज दिस फायरवॉल ऑन द साइट, ठीक है? And second, this will be more costly for me. Why? Because I need to pay for hardware and as well as for license and services. क्योंकि एक डिवाइस के साथ उसका लाइसेंस भी आएगा जिसमें आपको सारी सर्विसेज मिलती है, लाइक URL फिल्टरिंग होगी, DNS फिल्टरिंग होगी, या फिर डीप पैकेट इंस्पेक्शन होगा. 10 तरह की चीज़ें होती हैं एक फायरवॉल के अंदर, ठीक है? कि ये यूज़र क्या क्या एक्सेस करता है और कौन कौन सी सर्विसेज एक्सेस करता है. सो दिस विल बी मोर कॉस्टली सॉल्यूशन फॉर मी, और कंपनी मे बी मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतना अफोर्ड ना करे, राइट? तो आई कैन यूज इंटरनेट बट नॉट एज डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम हेयर. वाई? बिकॉज आई कांट अफोर्ड वन मोर सिक्योरिटी डिवाइस हेयर, राइट? लाइक ए फायरवॉल. सो
हम कौन सा सॉल्यूशन ला सकते हैं इसके बाद, लाइक व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आइडिया। अगर यूज़र को इंटरनेट भी चाहिए और उसको डेटा सेंटर में भी जाना है, तो आइडिया इसका यही रहेगा यहाँ पे। अब these are the both transports again, and here is firewall, and this is router. Okay, we are using both transport, but हम use कैसे करेंगे, let me tell you. This is internet and this is MPLS, okay, and this is router, and here we have firewall. तो अब यूज़र को जब भी क्या करना होगा, if user want to access something from data center, so it can forward the traffic via MPLS to DC and access any kind of services. Okay, those are exist here. तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर होता है हमारा कि जब भी यूज़र को क्या करना होगा, कुछ भी एक्सेस करना, डेटा सेंटर में फ्रीली आएगा, एक्सेस कर लेगा. एंड सेकंड पॉइंट, इफ़ यूज़र वांट टू एक्सेस समथिंग from internet, like user want to access some Google documents, okay, so they need Google access. If they want to check YouTube for some training videos, okay, और उनको कुछ भी चेक करना है तो they need internet access, but again they are not going to be use this link directly. Why? Let me give you the reason. अगर वो यूज़ भी करना चाहे कर सकते हैं, बट नॉट लाइक दिस. सो सबसे पहले ट्रैफिक अगर यूज़र का इंटरनेट पे जाएगा, इट मस्ट फॉरवर्ड वाया MPLS टू फायरवॉल, ओके. एंड फायरवॉल हैव टू लुक अप इनटू द पॉलिसीज कि मेरी कौन कौन सी पॉलिसीज होंगी जिनको मैच करेगा क्राइटेरिया, एंड देन यूजर इज एलिजिबल टू एक्सेस द पर्टिकुलर सर्विसेज एंड ट्रैफिक विल फॉरवर्ड टू द इंटरनेट, राइट, एंड रिवर्ट भी मेरा ऐसे ही होगा. बट अगेन द पॉइंट इज, अगर मेरा MPLS लिंक डाउन चला जाता है तो यूजर, मे बी यूजर इज नॉट एबल टू एक्सेस इंटरनेट नाउ, ओके, और द सर्विसेज. सो आई हैव अनदर ट्रांसपोर्ट फॉर द बैकअप पाथ. तो इंटरनेट को मैं एज ए कैसे यूज़ कर सकता हूँ, एज ए बैकअप पाथ यूज़ कर सकता हूँ, बैकअप लिंक यूज़ कर सकता हूँ. हाउ इट विल बी यूज एज ए बैकअप लिंक, आई विल मेक ए VPN ओवर दिस. मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक VPN बना लूँगा फायरवॉल और इस राउटर के बीच में ओवर द इंटरनेट. तो ये मेरा जो VPN होगा, अब सारा कम्युनिकेशन कैसे होगा, यूज़र will access data center services through this VPN like this, okay. And also if user want to access the internet services, so first of all it will move to the data center via this VPN, and then it will exit from the firewall to the internet. तो यहाँ पे हम ऐसे MPLS और इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं इन ए ट्रेडिशनल नेटवर्क, इन ए ट्रेडिशनल नेटवर्क. इज देयर एनी डाउट गाइस? इंटरनेट और MPLS को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे. तो MPLS बेसिकली मेरा साइट्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए होगा, एंड इंटरनेट को मैं एज ए बैकअप रख सकता हूँ कि पहले सारा ट्रैफिक मेरा डेटा सेंटर में आए, एंड देन डेटा सेंटर में जो फायरवॉल है वहाँ पे पॉलिसीज चेक हो, और उसके बाद फायरवॉल को एग्जिट करके वो इंटरनेट पे जाएँ, राइट. एंड रिप्लाई विल बी द सेम. तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रैफिक अगर मेरा यूज़र से, मेरा ट्रैफिक यूज़र से DC में गया है और DC से इंटरनेट पे गया, तो रिप्लाई विल बी द सेम वे, क्योंकि फायरवॉल पे आएगा पहले, फिर फायरवॉल से मेरा वाया दिस VPN यूज़र के पास रिप्लाई आएगा, ओके. सो दिस विल बी द वे ऑफ द कम्युनिकेशन. अब यहाँ पे डाउट है किसी को? एनी डाउट? ओके. सो आई यूज्ड हियर वन टर्म दैट इज VPN. सो VPN के बारे में आपको क्या पता है, VPN क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड बेसिक आइडिया एनीवन नो? लाइक आई यूज ए टर्म हियर VPN. सो व्हाट इज VPN? To provide secure communication over the internet, right? अगर मैं बात करूँ कि आई वांट टू शेयर डेटा बिटवीन द साइट्स, बट आई वांट टू मेक श्योर सिक्योरिटी, देयर मस्ट बी सिक्योरिटी, लाइक
if I'm sharing my data from one A site to B site, so my data will be in encrypted format and that would not be understandable by a third person कि जो मेरे नेटवर्क का पार्ट नहीं है या कोई ISP पे बैठा है या कोई अटैक कर रहा है, right? So that is possible with the help of VPN. If I talk about only two sites, so then I'm using here IPsec. I use always IPsec, but that is known as site to site VPN. That is known as site to site VPN. अगर मैं सिर्फ दो साइट्स की बात करता हूँ, and suppose I have here this is my router 1, and here I'm using suppose internet directly, and here is site 2. Okay, so what I'm going to use, I'm going to use here site to site VPN like this. Okay, so this is site to site VPN. But if I'm talking about I have multiple sites and I want to use same kind of solution over here, like जो मैंने यहाँ पे use किया था, we have MPLS and internet as well. So what we can do in that case? So Cisco is giving you a solution that is known as DMVPN. That is known as DMVPN is actually giving you VPN connectivity between multiple sites in a single VPN. What I mean by single VPN, suppose here I have hub device or it can be firewall in my data center, and we are using here public transport internet. Okay, and this is my branch router, and here is branch router, and here also branch router, right? So everyone is connected like this. Now here I'm using a public IP, like here is 101.1.1.1 something like this, 102.1.1.1, 103.1.1.1 and 104.1.1.1. So ये सारी public IP है. And the first option we have, we can make IPsec site to site, like एक मेरी ये वाली tunnel बन गई, and second tunnel I can use between firewall and the site 2 router. Third I can use here like this, right? But there are multiple tunnels on firewall end, right? So this is not a good idea. So what we can do, we can use a single tunnel, that is DMVPN solution. So DMVPN solution says you can use a single tunnel here like this. Okay, so now you can see firewall have single tunnel. So on single tunnel I need to use a single network, like I'm using my private network 172.16.1.1 here, 172.16.1.2. जो हम ये 172 का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, दिस इज ओवर द टनल. एक मेरी पब्लिक आईपी है विच इज द WAN IP on my physical interface, right? And through this WAN IP I am able to reach on my all the spoke sites like this. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको hub site बोलते हैं. hub is like data center or headquarter, spokes are my branches. Okay, and जो ये वाली IP है, this is the public IP address of every site. Okay, and public IP address always reachable with each other because ISP is responsible for that. अगर इनके बीच में reachability नहीं है, that means there is some problem from ISP end, right? And once we have reachability between the site through public IP address, then we are going to create our tunnel. Okay, and that tunnel is here DVPN right now, and tunnel also have its own subnet, क्योंकि tunnel का भी एक अपना subnet होगा ना जो अलग network की तरह काम करेगा. Like you can say all devices are connected through a switch now. तो ये मेरा firewall है and I am using a switch, and these are my three routers, right? R1, R2 and R3. अब यहाँ पे सपोज करो दिस इज फिजिकल टोपोलॉजी, बट वर्चुअली ये ऐसे विजिबल होगी कि सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं दे आर कनेक्टेड विद द सेम सबनेट लाइक दिस 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4, right? Because once they form the DVPN tunnel with firewall, so it look like they are connected with the switch and they are on the same subnet. Okay, जो टनल का सबनेट होगा वो सेम होगा यहाँ पे, and this is the advantage. And with DMVPN we will use IPsec to secure the data, right? So this is the combination of the DMVPN and IPsec in traditional network. Okay, if I have multiple sites,
तो ये हमारा किसका था, ये ट्रेडिशनल का था। एंड IPsec इज हेयर टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन, लाइक दिस इज गिविंग मी कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब पता है सभी को? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि मेरा सारा डेटा कॉन्फिडेंशियल होगा जो मैं शेयर करूंगा एक साइट से दूसरी साइट। नो वन कैन सी दैट द ओरिजिनल डेटा, वो ओरिजिनल डेटा होगा, हमेशा इनक्रिप्टेड होगा, राइट? इफ यू नो अबाउट IPsec। Guys, any doubt? Is it clear to all of you? Okay, great. So let's move. So ये हमने डिस्कस किया कि हाउ ट्रेडिशनल नेटवर्क लुक लाइक्स एंड हाउ वी मेक कम्युनिकेशन विद ISP and the VPNs, right? After that, we have more things. If we go like the challenges and all these things. तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रेडिशनल नेटवर्क, राइट? So do you know about inefficiency of the traditional network? The first thing, this is costly. The traditional network architecture is costly. कैसे होगा वो भी बात करेंगे हम. Second, higher latency. ये मैं समझा चुका हूँ but I will explain you again what is the meaning of that. And the third is availability. Okay. And the fourth thing is no direct internet access. Okay. And the last one is no centralized management. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो डू यू नो व्हाई द ट्रेडिशनल नेटवर्क इज कॉस्टली? इफ आई आस्क, okay, let me give you example. We have here data center again, and here is the branch site, and we are using here MPLS solution. Okay, so my the device is connected with MPLS, and here I have some firewall or something like this. भाई आपको रोटी खा ली है? Just a minute. Okay, so this is connected with firewall. ठीक है, और firewall is also connected with here internet like this. Now you can say अगर मेरे इस MPLS link की bandwidth right now I am using 20 Mbps link. Okay, so according to the criteria, or you can say according to the requirement of today network, everyone is moving on the cloud. तो जितने भी हमारी सर्विसेज है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है ना? क्लाउड पे एग्जिस्ट करती है. लाइक कौन कौन सी सर्विसेज? IaaS services, right? And those services and SaaS services, right? Like अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, ऐसा ना बोल के, तो ये आप कैटेगराइज किया हुआ है सर्विसेज को. We can say we are using here Office 365, right? And we are using some Excel files. Okay, that is also on the cloud. And if I'm using some my virtual server, so I can purchase virtual machine. Like I want to install my Windows server, server 2016 या 19, तो वो भी मैं क्लाउड पे इंस्टॉल कर सकता हूँ. एंड इफ़ आई एम मैनेजिंग सम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस लाइक सोशल मीडिया एप्लीकेशन, लाइक अगर इंस्टाग्राम की बात करूँ, तो इंस्टाग्राम इज़ ऑल्सो होस्टेड ऑन द
क्लाउड। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्लाउड पे एग्जिस्ट करती है। एंड सपोज माई ऑर्गेनाइजेशन use all these applications to manage them, okay, for the end users, like end user कौन है, हम जैसे जो Instagram यूज़ करते हैं, Facebook यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली दो सर्वर्स आर होस्टेड ऑन द क्लाउड। तो उन सारी साइट्स को इंटरनेट पे जाना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल मूव टू द डेटा सेंटर, बट नाउ डेटा सेंटर हैव नो सर्विसेज। वाई? बिकॉज वी शिफ्टेड द सर्विसेज। लाइक अगर मैं यहाँ पे अपने सर्वर्स को यूज़ करूँगा एंड आई एम यूजिंग सिंगल डेटा सेंटर, सो देयर विल बी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, राइट। अगर पूरा डीसी डाउन हो गया मेरा, तो सब कुछ डाउन हो जाएगा, सारी सर्विसेज डाउन हो जाएंगी, राइट। So they have shifted the all services over the internet. So I need to move the traffic through the MPLS transport, and then through firewall policies it will be permitted and then forward to the internet. तो internet पे जाएगा तो ही सारी services क्या होंगी, accessible होंगी। But now you can say day by day my users are using more and more internet. So user need now high speed. What they need? They need high speed, right, for communication with cloud and these VMs. So with time maybe this 20 Mbps link is not sufficient. So what I will do, I'm going to increase the bandwidth from 20 to 50 Mbps now. बट जैसे ही मैं 50 Mbps पे जाऊंगा, ऑलरेडी MPLS सॉल्यूशन क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है मेरे लिए, क्योंकि दिस इज मोस्ट एक्सपेंसिव सॉल्यूशन, राइट, और लिंक वी आर यूजिंग। तो जैसे मैं बैंडविड्थ क्या करूँगा, इंक्रीज करूँगा, तो मुझे और ज़्यादा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, यहाँ पे मेरे कॉस्टली हो जाएगा। बट सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास क्या, हम ट्रैफिक को डीसी में ना फॉरवर्ड करके व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली फॉरवर्ड द ट्रैफिक टू द इंटरनेट। बट अगेन आई हैव टू परचेज ए अप्लायंस, सिक्योरिटी अप्लायंस। क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, आई नीड ए सिक्योरिटी अप्लायंस हेयर, जो क्या करे, security provide करे, and I can install a firewall here like this, okay, but I need to pay for that, and जो भी इसके लाइसेंसेस होंगे, जो इसकी सर्विसेज होंगी, उन सब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा। So again this solution is getting more expensive for me and my organization, right, maybe जो afford ना कर पाए। So that's why the traditional is now more expensive, okay, so that's why we can say this is the costly solution. Is it clear? Guys, if there is any doubt, please you can ask, no need to hesitate, okay. And the second point is higher latency. What is the meaning of higher latency? If I'm giving you the example from the same topology, okay, so what we have this architecture, okay. Now again, if any host is exist here and who need internet services like the cloud services, so again host is moving to the data center and then forwarding the traffic to the internet. So this is not that right way to forward the traffic. Why? Because maybe because of the uh, my device is located here. So what I'm managing the central security, okay. So I have centralized security in my network. What is the meaning of centralized security? सेंट्रलाइज सिक्योरिटी वो होती है जिसमें हम क्या करें, हम सारे लोकेशंस के लिए सिक्योरिटी एक पर्टिकुलर साइट पे कॉन्फ़िगर करें, एंड वहाँ से आपका ट्रैफिक क्या होगा, एग्जिट होगा, टू चेक एवरीथिंग। लाइक आई वांट टू चेक डीएनएस फिल्टरिंग, ओके, आई वांट टू चेक यूआरएल फिल्टरिंग, एंड ऑल्सो आई वांट टू इंस्पेक्ट द डेटा, कि डेटा जो भी आएगा वो मेलिशियस ना हो। तो उसके लिए आईपीएस जो भी आईपीएस होगा आपका, सिग्नेचर्स के बेसिस पे क्या करेगा, ट्रैफिक को वेरीफाई करेगा, स्कैन करेगा ट्रैफिक को, लाइक ईमेल होगी आपकी, या ईमेल में कुछ अटैच्ड आपका डेटा है। सो ऑल दोज थिंग्स आर वेरीफाइड थ्रू द सेंट्रलाइज सर्विसेज और सेंट्रलाइज सिक्योरिटी सर्विसेज, राइट। एंड उसके बाद आपका ट्रैफिक कहाँ पे जा रहा है, इंटरनेट पे। सो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर मी। बट ये बेस्ट सोल्यूशन मुझे क्या दे रहा है यहाँ पे, लेटेंसी दे रहा है। वाई? बिकॉज द ट्रैफिक इज मूविंग फ्रॉम वन साइट टू अनदर एंड देन मूविंग टू द इंटरनेट। सो रीज़न क्या हो सकता है, मे बी द लोकेशन क्या हो सकती है मेरी, एक लोकेशन यहाँ पे मेरी ये इंडिया में है, और ये मेरा कहाँ पे है, ये यूएसए में है, राइट।
डेटा सेंटर। तो उसके लिए क्या होगा, सारा ट्रैफिक पहले इंडिया से यूएसए में जाएगा, एंड देन यूएसए से फायरवॉल के थ्रू कहाँ पे जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा। तो ये मुझे क्या देगा, यहाँ पे लेटेंसी देगा, राइट। यहाँ से तो इंडिया से ही तो मैं डायरेक्ट इंटरनेट पे जा सकता था, राइट, जिन भी मुझे सर्विसेज को एक्सेस करना था, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगेन जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वो बढ़ेगी इससे, राइट, और मुझे हार्डवेयर परचेज करना होगा, अप्लाइंसेस की कॉस्ट होगी एंड इंजीनियर्स की कॉस्ट होगी। तो वो सारी चीज़ें मैटर करेंगे, बट ड्यू टू दैट मेरा जो करंट नेटवर्क है वो भी इफेक्ट होगा। आई विल गेट लेटेंसी एंड देयर विल बी स्लोनेस इन द नेटवर्क। लाइक आप बोलोगे कि मेरे नेटवर्क में स्लोनेस होती है, आपने सुना होगा व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सेस ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन, लाइक हम सैप यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क में, राइट, टू कनेक्ट सम एप्लीकेशंस, ओके, विच आर होस्टेड ऑन द क्लाउड। तो सैप एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए यू विल फेस स्लोनेस इन द नेटवर्क, ओके। Okay, so this is the second problem. And after that, if we come to more point, the availability. What is the meaning of availability? Availability means if I have single point failure in the network. हमारे पास क्या यहाँ पे सिंगल पॉइंट फेलियर कैसे, आई हैव सिंगल डेटा सेंटर, अगर मेरे पास सिंगल डेटा सेंटर है एंड एंटायर डेटा सेंटर वेंट डाउन बिकॉज ऑफ सम कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मे बी आपका अर्थक्वेक आ जाए या कोई और सिचुएशन हो जाए, वॉर सिचुएशन है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा पूरा डेटा सेंटर तो डाउन हो गया उस साइड पे, लाइक ये मेरा यूएसए में था और वहाँ पे कुछ हो गया ऐसा, ओके, देन माय अदर साइट्स आर आल्सो नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद इंटरनेट एंड इवन विद मोर साइट्स, जो मेरी दूसरी साइट्स है किसी और सिटी या कंट्री में लोकेटेड, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबिलिटी इशू विद ट्रेडिशनल नेटवर्क, ओके। And the next point is here, no direct internet access. No direct internet access means you have to access the internet through the data center. Again, if you are using direct internet access, you need additional appliance here. Again ये costly solution होगा, but इस costly solution को ना यूज़ करते हुए मुझे और challenges आ रहे हैं। डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस नहीं है, लेटेंसी नहीं है, सॉरी लेटेंसी है, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज नो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सो नो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। ऑल डिवाइसेस आर मैनेज्ड इंडिविजुअली, राइट, लाइक इफ आई वांट टू कॉन्फ़िगर, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आई हैव टू कॉन्फ़िगर ऑल द डिवाइसेस थ्रू द CLI और थ्रू द GUI, राइट। तो CLI के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टूल्स लाइक और प्रोटोकॉल्स, टेलनेट के थ्रू हम कर सकते हैं एंड वी कैन यूज SSH, ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट GUI, तो GUI के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मली HTTP यूज़ करते हैं, बट फॉर सम डिवाइसेस इवन यू कैन यूज HTTP, बट विच इज़ नॉट सिक्योर, वी नो। And this is all configuration done one by one, right? You have to access all the devices one by one, and again this will consume a lot of time, so it will consume time and manpower, right? तो एक ये challenge है हमारे पास। And the next one is if you talk about the management, right, like management in the sense I'm talking about management plane traffic or manage services. So I have to configure that is also individually, like I want to configure SNMP all the devices to monitor them, right? अगर मुझे SNMP configure करना है to monitor the devices, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर करना होगा, एंड कॉन्फ़िगरेशन के बाद मेरे पास अलग से सर्वर्स होंगे जो SNMP के लिए काम करते हैं, जहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी मॉनिटरिंग और जो भी रिपोर्ट्स है वो सब चीज़ें ले सकता हूँ, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस है हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क के साथ। तो टिल नाउ इज देयर एनी डाउट गाइस? हेलो, एम आई ऑडिबल? Okay, now the next point is these are the challenges what we are facing with traditional network. And if I talk about that
traditional device like a router or a switch, how they are forwarding the data and what type of traffic they manage. So there are three type of traffic which is managed by router. Okay, so we have the first one is we have control plane, and we have management plane, and the last one is data plane. So which traffic is part of the control plane? Anyone know? Like we have routing protocols, right? Routing protocols, okay, and like AIGRP, OSPF, BGP, okay. So once router form the table, like build the routing table, so they need routing protocols to exchange the routes and install them in routing table. So that is part of the control plane traffic. And after that we have management plane. Management plane means how you manage your device. So first of all we configure with the CLI, like I'm using telnet, okay, I'm using SSH, and for monitoring maybe I'm using SNMP, and for more security and authentication maybe I'm using AAA. So this is part of management plane. And data plane is end user data, like we are using internet right now, so we are the end user, right? So whenever end user access any kind of application or services, so that is part of data plane traffic. तो अगर मैं बात करूं किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस या राउटर की, like here I have router 1, router 2, router 3, 4 and 5, and they are connected like this, okay. And here one server is located, right, and end users are located with this device, okay. So first of all I'm talking about, here we have some network, like the network is 203.1.1.0/24, okay, and the LAN network is 10.1.1.0/24. अगर मैं बात करूँ इन यूजर्स को सर्वर को एक्सेस करना है, एंड दे वांट टू एक्सेस सम एप्लीकेशंस, ओके, लाइक दे वांट टू एक्सेस हियर some data from this server. So how they are able to access the data? The thing is, first of all, user always forward the traffic to the gateway device, which is the router, and router need routes in routing table. What router need? Routes in routing table, right? So it's always look up in routing table. If there is no route, then router is going to drop the data, okay. So to install the route, we need to run here routing protocols, like as we discussed, we have EIGRP, OSPF, BGP, and maybe there is ISIs, okay, the intermediate system. So after running the routing protocol, they are eligible to exchange the routes with each other, right? And they install in the routing table. So that means first of all they form the control plane. Always they form the control plane, right? Once control plane is done, and then user is able to forward the traffic through the best path, maybe this is the best path, to the server, and server will respond maybe using the same path or the different path, like this. So when user is eligible to access all the services, these are located on this particular server, so this is part of user data. And what is the meaning of management plane here? Because as we see, if we are talking about routing and user data, we don't need management plane, but we need management plane if we want to access or we want to configure these devices. Because every time this is not possible for me, like I'm going to use a console cable, right, and through this console cable I'm going to configure each one of the router, right, okay. So this is not possible because this will consume time, because maybe the router is not located at the same location, they are part of multiple locations, okay. So we have management traffic here to manage the devices. So what I can do, I can access remotely this router, this router, this router, and these two as well, okay. And to monitor them, I can configure SNMP.
And to give more security or more privilege to a user, I can use AAA: authentication, authorization, and accounting. So this is possible with ICE in Cisco, and there are more features, okay, if you go for non-Cisco. Now let me make a architecture of a router. So suppose this is a router. So let's divide this router in three parts. Okay, so this is the CPU of the router. So as we know, CPU always manage the RIP. RIP means routing information base, routing table. And routing table always managed through the protocols like EIGRP, OSPF, and BGP, right? And the management plane is also part of the CPU because CPU is involved directly in these kind of activity. And management plane we discussed already. We have telnet, SSH, SNMP, and AAA, and maybe there you have syslog, and there are more things. Okay, okay. So these are the part of CPU. And now the next thing is known as fabric. So we will come on fabric as well. What is fabric and what is the use case of it? And the next one is IO module. Anyone know about IO module? IO module stand for input and output interface. This is actually related to the hardware. Like we know devices have multiple interfaces. Okay, the physical interface. So one physical interface is here, second is here, third is here, the fourth is here, and the fifth is here, right? So maybe the switch is connected here, user is connected. So let's assume the users are connected actually, but this is not possible. We always use a switch or another device. But just for example right now. And this IO module is your interfaces, okay? And as we know, if my this user want to communicate with second user, they always forward the traffic to the router. But now it's depend on the router how router is going to forward the traffic. यूजुअली राउटर डायरेक्टली कभी भी राउटिंग टेबल चेक नहीं करता. अगर वो राउटिंग टेबल चेक करेगा इट विल कंज्यूम द CPU, एंड दैट मीन्स वी आर यूटिलाइजिंग CPU इन अनदर एक्टिविटी. लाइक CPU का क्या काम होना चाहिए, जो मेन काम होना चाहिए, राइट? एंड जो अदर एक्टिविटी है, यूज़र ट्रैफिक है, वो सारी चीज़ें हमारे किसको करनी चाहिए, जो हार्डवेयर पार्ट है. सो यू नो इन सिस्को वी हैव वन थिंग दैट इज नोन एज FIB, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, और यू कैन से SEF. SEF के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग. सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग क्या करता है आपका, ये एक डुप्लीकेट राउटिंग टेबल होती है. व्हाट इट इज? Duplicate routing table. That means when your routing table is built, at the same time CPU forward the duplicate copy of the routing table to the IO module. That means अगर मेरी ये routing table बनती है, यहाँ पे मेरे routing protocols क्या करते हैं, route exchange करेंगे and CPU will build the routing table. सारे route install होंगे, best algorithm चलेंगे and जो best path आपका वो decide हो जाएगा कौन सा best path है. And at the same moment जो राउटिंग टेबल होगी उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी किसके पास, आईओ मॉड्यूल के पास, जो हार्डवेयर मॉड्यूल है, राइट? एंड इन सिस्को वी कॉल इट सेफ. एंड नॉर्मली यू विल हेयर अबाउट फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस. ओके, एंड ये हो गया आपकी डुप्लीकेट राउटिंग टेबल. दैट मीन्स whenever user is coming to the router, it's always check the ceph table or forwarding information based table and take the decision according to that, exit the traffic directly from the IO module instead checking of the CPU. but CPU कुछ चीज़ों में चेक होगा, कुछ ट्रैफिक के लिए चेक होगा. like what kind of traffic? if I'm talking about, I'm using here quality of service, right? I'm using some ACL or I have some type of policy, okay, or PBR, right? So there are more things according to that. Device have to check CPU. otherwise if there is normal traffic, तो normal traffic के केस में क्या होगा, डायरेक्टली ट्रैफिक आएगा IO मॉड्यूल के पास
IO मॉड्यूल विल चेक द सेफ टेबल, ओके, एंड ये डिसीजन लेगा और ट्रैफिक को क्या कर देगा, बाहर फॉरवर्ड कर देगा. दैट मीन्स वी आर नॉट इन्वॉल्विंग द सीपीयू डायरेक्टली इन यूजर डेटा फॉरवर्डिंग. तो जो सारा यूजर डेटा फॉरवर्डिंग है वो कौन कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स जो आपका डेटा प्लेन है, डेटा प्लेन के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका आईओ मॉड्यूल पार्ट या सेफ बोल दो आप, राइट. तो राउटर में हमने डेटा प्लेन का काम किसको दिया, सेफ को दिया. एंड जितना भी हमारा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक था, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कंट्रोल प्लेन के लिए और मैनेजमेंट प्लेन के लिए हमारा है सीपीयू रिस्पॉन्सिबल. ओके. एंड नाउ व्हाट इज फैब्रिक, ये फैब्रिक का काम क्या है फिर इस केस में. तो फैब्रिक इज एक्चुअली गिविंग कनेक्टिविटी बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर ऑफ द डिवाइस. तो फैब्रिक क्या यहाँ पे आपको कनेक्शन दे रहा है, किस किस के बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, कि उनकी कनेक्टिविटी कैसे होंगी, वो कैसे डेटा शेयर करेंगे, राइट. लाइक आपकी जो डुप्लीकेट कॉपी आ रही राउटिंग टेबल की किसके पास, आईओ मॉड्यूल के पास. सो फैब्रिक विल हेल्प दैट. ओके. ओके. सो जितना भी ट्रैफिक होगा आपका सीपीयू और आईओ मॉड्यूल के बीच में एक्सचेंज होगा, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फैब्रिक. ओके. तो इस चीज़ को समझने में कोई डाउट है किसी को, लाइक हाउ अ राउटर वर्क्स, ओके, एंड हाउ इट्स डिवाइडेड मल्टीपल पार्ट. तो अगर मेरा एक राउटर है, इसके मल्टीपल टास्क है, एंड दैट हाउ दिस टास्क आर डिवाइडेड, राइट. तो जितना भी मेरा जो मेन काम होगा दैट इज विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, एंड जो यूजर ट्रैफिक होगा ऑलवेज फॉरवर्ड थ्रू द आईओ मॉड्यूल डायरेक्टली, ओके, विदाउट इन्वॉल्विंग routing table. Any doubt? Is it clear to all of you? Everyone? Okay, great. So this is all about the traditional network. Now you know the problems or challenges with traditional network, right? So now how SD-WAN is giving you efficiency of WAN network or a enterprise network, right? So we have multiple solutions here, okay, and the single solution name is known as SDN. So this is SDN. SDN stand for software defined network. सो SDN आपको वो सारी चीज़ों जो आपने फेस की है एक एंटरप्राइज नेटवर्क में या फिर आपने फेस की है एक वैन नेटवर्क में, सो वी हैव सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ SDN. सो SDN इज गिविंग यू another approach to divide the task, okay, and to separate them. Let me explain you. Think I have. ओके. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था हाउ वैन हैज़ चेंज्ड, तो क्या क्या चीज़ें थी और कैसे वो काम कर रहे थे, लाइक एज वी डिस्कस्ड. Like user is existing in your branch network, this is user and which is part of the branch. So here we have branch, and branch is connected with your WAN network like MPLS, and then moving data to data center and data center to internet, right. So that was the previous approach, okay. But now we have here in SD-WAN solution, or SDN is giving you direct ability to user to exit the branch, and you have multiple transport like MPLS or internet, then you can directly move to your data center if you want, and you can move to the multiple clouds and SaaS applications and internet, right. So this is possible with the help of SDN solution, okay. Okay, now let's check the architecture. So these are the challenges, okay.
like the expensive solution and difficult to support because we need to configure one by one. Management is complex, okay. And inflexible because the tightly controlled and client server module जो हमने डिस्कस किया. एंड poorly integrated because जो कॉन्फ़िगरेशन है या पॉलिसीज़ है वो हमें हर जगह कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी या फिर एक सिंगल सेंट्रलाइज पॉलिसी होगी जो डेटा सेंटर में एग्जिस्ट कर सकती है, राइट. एंड कनेक्टिविटी सेंट्रिक करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हैं. ओके. Okay, we can use this one. SDN is providing us this solution, right? Okay. This is about SD-WAN, but just forget for now SD-WAN. So in this solution, you can say what we are getting here. The first of all, this is your one part, right? Okay. And this is the second part, and this is the third part, right? So in first part we have controllers. What we have, I told you in the initial of the class, like we have controllers in automation. So controllers are depend on the type of solution, which solution you are using. Like we have SD-WAN solution for WAN, we have SDA solution for enterprise network, and ACI for data center. Okay, I will explain that as well. So all the controllers are exist here, right? And how we will deploy that, that will be another point. So you can say we have vManage, vSmart, okay. And here is one more which is not visible, that is vBond for orchestration, okay. For just for now, make it more simple, this is controller, okay. We have internet, MPLS, or LT, which is 3G and 4G, right, or 5G. And after that we have here routers, which is as router 1, as router 2, and as router 3, right. And they are connected like this. Now you can say this SDN solution is providing you like all management plane, and all control plane, that is managed through the controller. So that means आप क्या बोल सकते हो सिंपली कि जितने भी थ्री टाइप ऑफ ट्रैफिक हमने डिस्कस किया जो सिंगल राउटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पे, तो ये मेरा एक सिंगल राउटर था, राइट. इस सिंगल राउटर में कंट्रोल प्लेन भी था, मैनेजमेंट प्लेन, एंड एज वेल एज देयर इज डेटा प्लेन, ओके. So all type of traffic is now divided in multiple parts and the responsibility is given to different components, okay. तो यहाँ पे हुआ क्या है, जितने भी आपके सॉल्यूशन है, सभी सॉल्यूशन में कुछ कंट्रोलर्स होंगे, कुछ आपके ट्रांसपोर्ट होंगे, या कुछ आपके डिवाइसेस होंगे. सो जो भी कंट्रोलर्स हैं दोज आर गोइंग टू मैनेज योर मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक एंड कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक. कंट्रोल प्लेन मीन्स like my routing tables, right. And management plane is related to the manage the device and the monitoring the device and reporting of the device, right, वो सारी चीजें. And the transport is going to be used as my fabric. तो जिस फैब्रिक की हम बात कर रहे थे वहाँ पे जो CPU और आपका IO मॉड्यूल के बीच में आपका कम्युनिकेशन करवा रहा था, दैट इज फैब्रिक. एंड द सेम थिंग इज हेयर, like if my controllers are exist on the cloud or somewhere in my data center, right. So controllers are on cloud or maybe those can be exist in the DC, right. So ये devices कहीं और exist करते हैं, and my the routers, like these are the routers, okay, and those are exist in multiple sites, like that can be part of a branch network, okay. So this is in my branch 1,
and this is my in home office, okay, and this is my headquarter or something, right? So those routers are exist on different locations. So they are going to just forward the user data now. They no need to worry about how they will find the best path, because controllers are going to provide them best path. What is the best path and how you have to reach them, so that is the responsibility of the controllers now. Okay, so the thing is same here. Like we have same type of traffic control plane, management plane, and we have fabric and we have data plane. So now controllers forward the traffic through the transport to these and these as routers. Okay, so the transport is working as a fabric means which help to share data between controllers and the devices, the edge routers, right? Because edge routers are only responsible for data plane, so that means controllers are giving them the best routing table, and it will also install the best routing table and best routing table. Why? Because this controller share the best route here as well, here as well, and here as well, right? So that means now they no need to think like what will be my best path, how I will able to reach on home site, how I able to reach my headquarter network, right? So this is now like they have segregate the task. Okay, so is it clear to all of you, the solution SDN? Guys, Aditya, Ankit, Amit, at least you can give acknowledge so I will be confirmed. Okay, yes Aditya. Okay, okay, no problem. So now we have here SDN solution. So SDN is giving us multiple solution for the automation. Software defined network, right? And in software defined network we have three type of solution, which is the Cisco solution. So the first one is SD-WAN, and second is SD access, and third one is ACI. Okay, so this is stand for software defined WAN, right? And this is for software defined access, and this is for data center application centric infrastructure. Okay, okay, now this solution is actually used for WAN network. Okay, that we are going to discuss, and this one is used for an enterprise network, because uh, SD-WAN solution doesn't manage the internal device of a branch or of a any site like a switch, okay, or another components.
they only manage the edge device, like core device of a site. Okay. Enterprise network, like a LAN network. Okay. And ACI is actually which is for data center. So this is Cisco solution. All are Cisco solutions. Okay. This is for data center. So we are going to start with the SD-WAN solution here, because this is SD-WAN batch. So just give me a minute, guys. So in SD-WAN, first of all, we are going to discuss about the components of the SD-WAN. What are the components that we are going to be used here? Okay. So in SD-WAN architecture, we have information of the components, like what are the components we are using. So you can say these are the components we have. Okay. We have vManage, vSmart, and vEdge, right? And one is the vBond. So vBond is actually used for the orchestration plane. What is orchestration plane and what is the purpose of it? We will come on that point as well. And after that, we have here vManage. vManage is the device which is for management purpose. Okay. And vSmart is here for the control plane. And as you know, as devices are for the data plane, right? So let's discuss in deep about the components. So we have vManage, vSmart, and vBond. So these are the three controller exist in the SD-WAN. Okay. And after that, we have here transport, which is the same, and then we have here edge devices in SD-WAN as one and as two, and there can be more, right? So these three controllers are responsible for this part. We already discussed in SDN, but let me explain here. vMan management and control plane. Okay. So this is again work as a fabric, and here is the data plane, right? So SD-WAN contain three controllers. The first controller is vManage, second is vSmart, and third one is the vBond. So these three controller have divided these tasks: management, control plane, and one more added here. Normally we have three planes in traditional, like control, management, and data plane. But in SD-WAN there are four type of plane. Management plane is the same thing, configuration management, troubleshooting. Control plane is the same thing, like for routing protocols, to elect the best path, okay, to install the routes. And one more is here, that is orchestration plane. Orchestration plane is actually used for authentication here, right? If I want to authenticate, like suppose I want to add one more router in my one branch site, and I want this router also make virtual connections or tunnels, like that we will discuss later how they are going to form with the controllers. And we want like this router also get the route information from any controller, or like configuration from this controller. But before that, the SD-WAN solution always verify that is this component part of my organization, okay, or my solution. Then I'm going to onboard it. Onboard means whenever you are going to connect new device in SD-WAN solution, like this router I want to connect with vManage, vSmart, and vBond. So orchestration plane help us to authenticate or verify this is the true device, or this is not any attacker or false device which is going to onboard with my SD-WAN solution, right, or SD-WAN part. So that is the part of orchestration with the help of authentication using the multiple parameters. Okay.
and what will be the parameter for this authentication, we will discuss over that as well. And again fabric have same thing, we are using maybe internet link और हम MPLS भी यूज़ कर रहे होंगे, राइट, और कोई और सॉल्यूशन हो सकता है बैकअप के लिए. एंड डेटा प्लेन इज अगेन यूजर ट्रैफिक. ओके, now let's start with vManage. So I have some templates. uh, okay. Okay, now we can say first the first controller in SD-WAN is vManage, right, which is for management plane. अगर मैं vManage की बात करूं तो सबसे पहले हम इसको बोलते हैं VM with a single pane of glass. What is the meaning of that? Okay, let's make it more simple. vManage, the first thing I forget to tell you, the SD-WAN solution is Viptela solution, right? तो जो SD-WAN solution था किसका solution था? Viptela solution था WAN के लिए, for WAN network. Okay, but now this is acquired by Cisco. ठीक है, तो अब ये किसने खरीद लिया? सिस्को ने खरीद लिया. तो जो पुराना वर्जन था दैट वाज 19.x.x समथिंग, दैट वाज टोटली विप्टेला सॉल्यूशन, यानी उसको हम सिस्को विप्टेला सॉल्यूशन बोलते थे, राइट. सो दिस वाज सिस्को विप्टेला SD-WAN, right? But now Cisco have launched its own Catalyst version, Catalyst SD-WAN. तो जो अब आपका 20 पॉइंट यानी 12 है या फिर जो भी अबो है, तो वो सॉल्यूशन आपका कौन सा है? उसको हम सिस्को कैटलिस्ट SD-WAN बोलते हैं. एंड मे बी द नेम इज ऑल्सो डिफरेंट ऑफ द कंट्रोलर, लाइक हेयर वी कॉल इट vManage. ये vManage ना कि सिस्को कैटलिस्ट मैनेजर हो गया. ओके, यू हैव टू वेरीफाई दीज थिंग्स. लेट मी शो यू सिस्को Catalyst SD-WAN. Wait a minute. इंट्रोडक्शन ओवरव्यू स्टेपलर का है, स्टेपलर नहीं है यहाँ. ओके, तो जो आपका 20 वाला वर्जन है दैट इज सिस्को कैटलिस्ट SD-WAN वर्जन, राइट. सो द नेम्स ऑफ द कंट्रोलर्स आर चेंज्ड. ओके, बट द वर्क एंड द थिंग्स आर सेम, बट सिस्को ने थोड़ा सा क्या किया, अपने डिवाइसेस को थोड़ा और ऐड ऑन किया कैटलिस्ट वर्जन के साथ और इंटीग्रेट किया उसको. ओके, so the thing is now if we are talking about the vManage, so what is the role of vManage in this SD-WAN solution?
So vManage is basically this is used for configuration, right? And management and T-shoot. यानी जो single device है, this is used for multiple purpose. That's why they call it single pane of glass. Okay, single box for multiple use. Okay. Is it clear to all of you? अब what type of configuration we can do with the help of vManage? Like अगर मैं configuration की बात करूँ, what I can do in configuration? So basically, vManage is giving you option to configure the device through the टेम्पलेट, यानी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका टेम्पलेट बनेगा एंड दैट टेम्पलेट यू कैन कॉन्फ़िगर और यू कैन पुश ऑन योर वैन एज राउटर्स। यानी मैं राउटर्स पे डायरेक्टली कॉन्फ़िगर न करके कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा, जो भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन है वो vManage पे बनेगी एंड आफ्टर दैट vManage विल पुश दैट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑन माई डिवाइसेस। तो वो सारी किसके फॉर्मेट में होगी, टेम्पलेट के फॉर्मेट में होगी। एंड फर्स्ट टाइप ऑफ टेम्पलेट इज़ योर CLI टेम्पलेट एंड उसके बाद जो टेम्पलेट बनती है मेरी, कौन सी बनती है, डिवाइस टेम्पलेट बनती है, राइट। तो CLI टेम्पलेट में क्या होता है, CLI टेम्पलेट में आई नीड टू कॉन्फ़िगर कंप्लीट टेम्पलेट विद द कमांड लाइन्स, जैसे हम एक राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं IP या वो सारी चीज़ें। सो थ्रू CLI वी नीड टू कॉन्फ़िगर, ओके। सो ऑल कमांड्स विथ CLI, ओके। एंड डिवाइस टेम्पलेट में क्या होगा, मेरे पास एक यूज़र इंटरफेस होगा और उस गोई यूज़र इंटरफेस के थ्रू मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, ओके। सो दिस इज़ विथ GUI instead of CLI commands, right? So that is possible with device template. यानी मेरी जो भी configuration होगी, like what kind of configuration I can configure on my as routers, like I want to configure OSPF, okay, so I need to create OSPF template. And if I want to configure IP address और interface, like मुझे interface define करना है, ये वाला interface है और ये particular IP address होगा इसके ऊपर, so that is also possible with template. It can be CLI template or device template. And second thing, I can configure more things, like I can configure IPsec tunnel with someone manually if I want. I can use ZRE tunnel, right? I can do multicasting, तो multicasting भी मैं configure कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो आई कैन कॉन्फ़िगर क्वालिटी ऑफ सर्विस। सो वो सारी चीज़ें जो मैं CLI से कॉन्फ़िगर कर रहा था आज तक, जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, नाउ दिस इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स। सो जो सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कहाँ पे बनेगी, आपके इस वाले डिवाइस पे बनेगी। लाइक हियर वी हैव डिवाइस, okay, so I will do all the configuration on this device and this is going to push the configuration on my routers, like here and here and here, right? So it will push the configuration on my devices and then they will implement the configuration, like now it have IP address here, it have BGP configuration here, it have multicasting configuration here, okay. So that is the purpose of the vManage from the point of view of configuration part, okay. And after that we discussed here from the management point of view, what is the meaning of management. Management in the sense I can manage all the devices through vManage. The second point is management, right? All SD-WAN devices can manage through it, right? Like what kind of configuration it can manage, like I want to take SSH of the device, so I now need to move on device specifically to take SSH। तो मुझे क्या करना होगा, vManage में ही मेरे पास ऑप्शन आता है, मैं SSH टर्मिनल में जाके उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट।
And secondly, I have here option to configure centralized AAA configuration. So I will make here AAA template, and that I will push on everyone. Okay, and I can check and monitor all the things are also from here. Like we can monitor the status of the tunnel. Okay, like tunnels का status क्या है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई सेंट्रल पॉइंट वेयर आई कैन चेक द हेल्थ ऑफ द डिवाइस, स्टेटस ऑफ द डिवाइस, राइट. तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, बट बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग. ओके, so is it clear? Now the point is, this is vManage and these are the tasks of vManage, and what else it can do, like we can say multi-tenant with web scale. What is the meaning of multi-tenant? Multi-tenant is basically suppose there are three organizations. Okay, like I'm giving you just an idea. Like we have here organization A, B and C. So these are three different organizations, but these organizations are using traditional architecture which have challenges. तो अब ये क्या चाहते हैं, एस डी वैन पे मूव होना चाहते हैं, बट एज वी नो एस डी वैन इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव सॉल्यूशन, राइट. तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको अफोर्ड ना कर पाए, तो यू कैन यूज दिस इन शेयरिंग, राइट. तो जब हम इस सॉल्यूशन को शेयरिंग में यूज़ करते हैं बिटवीन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, बट उनका जो पॉलिसीज होगा, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, दैट कैन बी स्टिल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, राइट, विदाउट एनी इंटरप्शन. तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंगल वी मैनेज को तीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करवा सकता हूँ, उनको अलग अलग मैनेज करने के लिए. लाइक आई हैव हियर वी मैनेज, ओके, एंड वी बॉन्ड इज हियर, वी स्मार्ट. तो ये मेरे कंट्रोलर्स हैं. अब यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन ए है, ओके, एंड दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन ए स्पोक साइट A1 and A2, and we have here organization B, and these are the site of B organization, right. And here we have organization C, and here is the sites of this organization. Okay, and they have their own transport, like they have internet and they are connected. They also have internet, and here also internet. तो मल्टी टेनेंटेड का मतलब क्या है, now everyone can use this solution. Okay, so this organization is also using SD-WAN solution, so there are separate template and separate policy for this vendor, right, or this organization. And for B as well, they have different configuration on these three controllers, and for C also they have different configuration here. That means these three controllers or SD-WAN solution is shared between these. Is it clear? Like what is the meaning of multi-tenant? You can use multiple tenant of the SD-WAN solution. Okay, so that is the main idea behind it. And after that, this is the centralized provisioning. Why? Because we have centralized uh, to monitor, to configure, okay, to the sites and the spoke site heads, like headquarter and the branch. So this is the central point where we can manage everything, we can troubleshoot and we can monitor, right. Okay, and this vManage is used to deploy the policies and the templates. So as I told you, templates for the configuration like CLI and device template, and policies means I want to filter the traffic or I want to block some traffic, so I need policy for that. Okay, and if I have to upgrade the devices, like I want to upgrade the operating version of these routers and the controllers like vBond and vSmart, and we have one more device here, that is vAnalytic. Okay, so I can upgrade, I can download the software and upload on the vManage, and vManage will push that to everyone. Okay, so that is also possible from here.
And SD-WAN solution in vManage is also giving you role-based access control. Role-based access control is actually a privileged based user access. Like we have multiple type of users, like we have L1 user, L2 user, and L3 user. So maybe you are giving just here monitoring level to this user, right? Like it can just monitor, it cannot configure. L2 with limited commands, okay, and L3 with your full control. So that means when I am defining multiples credential on my vManage, like if L1 access with these credential, it will only monitor the network. Okay. If L2 access with these credential, it will just have limited access of the configuration, like it can just configure interface cert, no cert, okay, and it can't create routing protocols, okay. So this is restricted, and just it can change the description of the interface, create the VPN, only the limited things. But if we have L3 engineer that have full control on that, so that is also possible here, right? And after that, as I told you, SD-WAN solution is also giving you programmatic interface like REST API and netconf. What it is, uh, if you know about scripting, let me give you idea. Like I have here PC, okay, and on this PC maybe I have some application, or that application can be on cloud, right? So this is application or any Java based application, okay, and this application is trying to connect with my vManage. So that means through this computer I can create here one kind of a script. So I will configure a script here, and in this script maybe I want to push the configuration, or I want to patch the configuration, right? Okay, or I want to get the configuration. That means vManage have multiple configuration, like it have templates, it have policies, okay, or it have info details of the devices, right? Like the list of the as routers, like how many routers are exist with this Viptela solution. Now all things are exist here. So if you want to push some new configuration, you can make a script, or that script is directly in the application and you can push it here, right? And that is possible with these tools. You can use netconf to push the configuration, or you can use RESTconf through the REST API, right? RESTful API. Okay, and you can get the configuration. Just want to know the detail of the edge devices, how many devices are associated with this vManage, so you can get the configuration, okay. And you will visible all configuration here in which format, that can be my JSON, XML, or YML, or it can be something else as well, right? So my data will be visible in these formats, okay. So that is means your Viptela solution is also compatible with your these protocols or these APIs. API means a software help to push configuration to another software, or get the configuration, okay. इज इट क्लियर गाइस? लाइक एक बेसिक आइडिया मिला आपको कि वी मैनेज काम क्या कर रहा है. बेसिकली वी मैनेज इज ए डिवाइस जो आपका कॉन्फ़िगरेशन भी करता है, ट्रबल शूट भी कर रहा है, मॉनिटरिंग भी कर रहा है, एंड ये मल्टीपल सॉल्यूशन देता है. लाइक इसको आप शेयरिंग में यूज़ कर सकते हो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. यानी आपको अगर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगता है, तो आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ लेते हो उसको शेयरिंग में ले लेते हो, एंड दैट विल बी वेरी इजी टू अफोर्ड, राइट, और मैनेज. और सेम इसको आप कॉन्फ़िगर या मैनेज कर सकते हो कुछ एपीआई की हेल्प से भी, ओके. एंड इज देयर एनीथिंग एल्स? या तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया लाइक व्हाट इज़ वी मैनेज एंड व्हाट इज़ द यूज केस ऑफ वी मैनेज. तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन? जस्ट गिव मी अ मिनट. तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है यहाँ पे? द नेक्स्ट वन इज वी स्मार्ट, राइट. तो वी स्मार्ट क्या, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज ऑल अबाउट वी मैनेज. So vSmart is basically for control plane.
Okay. So first of all, now we can say that this is for control plane. कंट्रोल प्लेन का मतलब क्या है कि जो भी आपकी राउटिंग टेबल्स या बेस्ट राउट का इलेक्शन होगा वो सारी चीज़ें आपका वी स्मार्ट डिसाइड करेगा आपका ओके। एंड वी विल डिस्कस लेटर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट ऑफ द SD-WAN सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसका जो काम क्या है, कंट्रोल प्लेन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना एंड डिस्ट्रीब्यूट दैट इंफॉर्मेशन टू ऑल द डिवाइसेस, राइट। ओके, let me explain you like this. And we have here vSmart. Okay, so this vSmart is responsible for multiple things in SD-WAN. The first thing, this is responsible for control plane traffic. Okay, अब आप बोलोगे सर हाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल प्लेन, क्योंकि vManage का काम क्या था फिर? vManage इज जस्ट फॉर कॉन्फ़िगरेशन, not for the control plane. Try to understand. I have vManage here. Okay, vManage पे मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम ट्राइंग टू कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगरेशन, लाइक मैंने यहाँ पे EIGRP कॉन्फ़िगर किया। ओके, मैंने यहाँ पे OSPF की टेम्पलेट बनाई, या फिर मैंने यहाँ पे पॉलिसीज बना ली। तो ये सारी चीज़ें जस्ट एज ए टेम्पलेट के फॉर्म में बन रही है, राइट। एंड आफ्टर दैट आई एम पुशिंग दिस टेम्पलेट ऑन अदर डिवाइसेस ऑफ SD-WAN। लाइक मैं ये किस पे पुश कर रहा हूँ? लेट मी मेक ए आर्किटेक्चर हियर। हियर वी हैव vSmart, vManage and vBound, right? Okay, and here we have internet. Here is as router 1, and there can be one more router as router 2, and there is one more router, right? So this is another site. Okay, that is branch 1, this is branch 2, and these are the controllers जो आपके डेटा सेंटर में भी हो सकते हैं डिप्लॉय और क्लाउड पे भी हो सकते हैं। ये आपका सोल्यूशन अब यहाँ पे। नाउ like I want to configure here EIGRP in this branch, I want to configure here OSPF। स्टिल राउटिंग प्रोटोकॉल इस पर भी काम करेंगे, रन करेंगे, इसकी भी राउटिंग टेबल होगी, इसका भी अपना राउटिंग टेबल होगा। बट ये राउटिंग टेबल कैसे बनता है? लाइक हमने यहाँ पे क्या किया, इस वाले कंट्रोलर पे मैंने टेम्पलेट्स बनाए। ओके, एंड दोज टेम्पलेट्स आई हैव पुश्ड ऑन दिस राउटर। तो इस पर EIGRP रन हुआ, इस पर EIGRP ऑलरेडी था तो इनकी नेबरशिप बनी, और जो यहाँ पे X राउट था वो इसके पास आ गया थ्रू EIGRP, राइट। एंड दिस X राउट, दिस राउटर इज गोइंग टू सेंड टू द कंट्रोलर। ये कौन से कंट्रोलर को भेजेगा? vSmart को भेजता है थ्रू ए प्रोटोकॉल विच इज SD-WAN प्रोटोकॉल ओनली, एंड यू कांट चेंज इट। ओके, अभी के लिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, मे बी सिस्को कुछ नया लेके आए जिसमें ये पॉसिबल हो। ओके, this is OMP overlay management protocol. We will discuss about this as well in detail. And similar we have here OSPF, and here is wide network. So R to share via OSPF wide network to this viptela router, but this viptela router can't share this route directly to the another router. That is not possible. Okay, तो ये क्या करेगा? This will share the route to the vSmart only. So now vSmart have both routes X and Y, and now this is going to share Y network here. Okay, now it will receive the Y network via OMP from vSmart, but the next stop is this router VS2. Okay, and similar this is going to share X network here to this router. Okay, here, and this have X network that is also coming through OMP protocol. So here is also OMP protocol, and this is coming from viptela 1, right? So that means this router have, if any route, or this viptela router have any route, they always share the routes to the vSmart. तो ये डिवाइस आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ यहाँ पे? कंट्रोल प्लेन के लिए। यानी सारे के सारे राउट्स जो भी ब्रांच में होंगे सबसे पहले किसके पास आएंगे? vSmart के पास आएंगे,
and vSmart will calculate the best path for this route. What it will do? It will calculate the best path, okay, and according to that best path ये वाले राउटर डिसीजन लेंगे कि मुझे एक दूसरी साइट पे कहाँ पे और किसके साथ जाना है. लाइक ये कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टली, ये कभी कंट्रोलर के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करेंगे डेटा फॉरवर्डिंग के लिए, यूजर डेटा के लिए बेसिकली. ओके, सो दे विल मेक देयर ओन टनल लाइक दिस, ओके, विद ईच अदर. तो ऐसी टनल बनेंगी. सो व्हेन एवर यूजर वांट टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक, अगर यहाँ से यूजर ट्रैफिक भेजता है टनल के थ्रू यहाँ पे जाएगा. ओके, दिस इज फॉर यूजर डेटा. बट जितना भी कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होगा उसके लिए पहले इनको कहाँ पे जाना पड़ेगा? vSmart के पास जाएंगे, vSmart बेस्ट राउट देगा और फिर वो उस राउट को आगे फॉरवर्ड करेगा और ये अपने राउट को इंस्टॉल करेगा एंड देन डिसाइड कि मुझे कहाँ से ट्रैफिक भेजना है. ओके, एंड फिर ये डायरेक्टली ट्रैफिक भेजते एक दूसरे को. ओके, सो यू कैन से vSmart इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल प्लेन. एंड सेकेंड थिंग मैंने बताया था कि जितनी भी पॉलिसीज कॉन्फ़िगर होंगी कहाँ पे कॉन्फ़िगर होंगी? इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट. पॉलिसीज आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्फ़िगर ऑन vManage. तो जितनी पॉलिसी कॉन्फ़िगर होंगी मेरी यहाँ पे होंगी, बट वो पॉलिसीज कॉन्फ़िगर होने के बाद आपके कौन से डिवाइस पे पुश करना, दैट इज़ द टास्क ऑफ vManage. लाइक मैं चाहता हूँ कि पॉलिसी मेरी मुझे vSmart पे पुश करनी है, अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई होगी. देखो दो चीज़ें यहाँ पे, फर्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होगी. सो कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज डन ऑन vManage. तो अगर मुझे कुछ भी पॉलिसी वगैरह बनानी है कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वो मैं बनाऊंगा vManage के ऊपर, राइट. एंड कॉन्फ़िगरेशन बनने के बाद vManage उसको पुश करेगा जहाँ पे वो जा सकती है. सो vSmart ऑलवेज हैव centralized policies for control plane and data plane. Okay, so it will implement the control plane policies. तो control plane policies में हम vSmart के ऊपर कौन सी policies पुश करते हैं हमेशा ही? That is known as centralized. Okay, centralized policies. तो centralized policies में दो टाइप की policy मिलेंगी हमेशा आपको. You can use data policy and you can use control policies. Okay, so that will be part of the policy. एंड आफ्टर दैट इसमें हम ये इसको बोलते हैं हमेशा ये राउट रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउट रिफ्लेक्टर? सो गाइस यू कैन से आई हैव हियर vSmart, ओके, एंड हियर इज वन विपटेलर राउटर एंड अनदर विपटेलर राउटर. सो इनके बीच में हमेशा एक कनेक्शन बना होगा, नेबरशिप बनी होगी. दैट इज़ योर OMP नेबरशिप. ओके, दैट इज़ OMP नेबरशिप. तो अगर इसके पास हमारा 10.1.0/24 का राउट है एंड हियर 10.1.2.0/24 का राउट है, सो दोज राउटर ऑलवेज सेंड द राउट्स टू vSmart फर्स्ट. तो ये राउट्स किसको फॉरवर्ड करते हैं? vSmart को फॉरवर्ड करेंगे, vSmart इसको आगे फॉरवर्ड करेगा. एंड सिमिलर दिस राउट एज वेल, डिवाइस विल फॉरवर्ड टू vSmart एंड vSmart विल फॉरवर्ड हेयर. तो BGP में कॉन्सेप्ट आता है, अगर जिसको पता है तो ठीक है, एक राउट रिफ्लेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है. उसमें क्या होता है, एक BGP राउटर, सपोज करो ये वाला आपका राउट रिफ्लेक्टर, ये नॉर्मल BGP राउटर्स हैं. तो सारे नॉर्मल राउटर हमेशा राउट रिफ्लेक्टर को देंगे एंड राउट रिफ्लेक्टर विल डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल ऑफ देम. तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, राइट. तो एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है जहाँ पे सारे राउट रिसीव करेगा ये, और उन राउट के ऊपर ये पॉलिसीज चेक करता है कि कौन सा बेस्ट देना है, कौन सा और नॉन बेस्ट बनेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग ये आगे शेयर करता है. ओके, सो और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में. लाइक देर आर मोर फीचर्स दैट वी गेट फॉर vSmart. ओके, सो टिल देयर इज एनी डाउट गाइस? हेलो.